Now if we talk about the zygote development in flowering plants, how this zygote develop in the flowering plant, this is the structure of a flower. We know very well about these parts. These colored parts like these are the petals, these are sepals, this is the male part, anther, and the long stalk like structure is filament, and this part is the female part. This is stigma, this is style, this is ovary, and inside the ovary this structure is called as ovule, and ovule contain what? Egg. Fine. So what happens when anthers mature? They release pollen grains. These pollen grains then transfer to the stigma. When stigma accept these pollen grains, then pollen grain germinate and a pollen tube will get start emerging from it, and male gametes are produced in this pollen tube. Then male gamete fuse with the egg which is present inside the ovule. Fertilization will takes place and will form zygote. After fertilization, what happens? Except this mother part, all the parts will fall off. Anthers, sepals, filament, all these parts will get fall off. Only the stigma, style, ovary or ovule will be retained. Fine. Then what happens after fertilization? Zygote will be developed into embryo, ovule will get converted into seed, and ovary will get converted into fruit, and fruit will develop a very thick wall or a covering around itself, which is called as pericarp. The function of pericarp, it is protective in action. फाइन. आपकी NCERT में, आपकी बुक में कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है इस तरह से. ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है. आपको ये स्ट्रक्चर बनाकर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये स्ट्रक्चर किस फ्रूट का है और P क्या है और S क्या है. अब हमें पता है कि फ्रूट जो है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, ना कि फ्रूट के बाहर. जैसे कि आप वाटरमेलन का एग्जांपल लोगे तो फ्रूट के वाटरमेलन के अंदर सीड है लेकिन बाहर क्या है? एक टफ कवरिंग है. सिमिलरली आप एग्जांपल ले सकते हो पी. सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ पी. ये क्या है? अंदर, इनसाइड, इनसाइड सीड, and this is the outermost covering made by the fruit, that is pericarp. This is brinjal, so this is what? Seed, and the outermost covering is the pericarp. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे अवॉइड मत करना, कभी डायग्राम समझकर इसको छोड़ दो. बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है. व्हाट इज एस एंड व्हाट इज पी? एस इज द सीड एंड पी इज द पेरिकार्प. सीड कैसे बना? जब ओव्यूल कन्वर्ट हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन. और पेरिकार्प कैसे बना? जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हुई और फ्रूट ने अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बनाई जिसे हमने बोला पेरिकार्प, विच इज प्रोटेक्टिव इन एक्शन. So this was all about the events in the sexual reproduction, pre-fertilization events, fertilization events and post-fertilization events. Fine. Today we have discussed about this topic, and tomorrow we will study about parthenogenesis, the last topic of this chapter. Fine.